welcome back to Cric-cast EP-2. I know, यार बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है Cric-cast EP-2 लाने में, बट खैर कोई नहीं. डिलेज कभी कभार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं. अब पता नहीं मेरे केस में क्या ही होगा, बट नॉनदलेस आज के टॉपिक के साथ शुरू करते हैं हम. तो Cric-cast का सेकेंड एपिसोड. It's again based on ICC tournaments, but इस बार सिंस अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो वर्ल्ड कप रिलेटेड इस बार ज़्यादा कुछ ज्ञान उतना होगा नहीं, बट देन ये मेरे ही कुछ पॉइंटर्स हैं. व्हाट आई फील इज़ लाइक अच्छा हाँ, इन सब चीज़ों को कवर करना चाहिए और आई नीड टू स्पीक अ लॉट ऑन दिस. खैर, without further delay, let's get started. तो इस क्रिककास्ट के सेकेंड एपिसोड में मेन मुद्दा है हाउ डू वी सी दी अपकमिंग ICC tournaments in the future after the boom of the T20 leagues. Well, अगर मैं बताऊं तो I do see गुड फ्यूचर इन इट. खैर इसमें मैं एक ही मतलब मेरे को लगता है कि इंटरनेशनल मैचेस जो पिछले एक दशक से जो कम हुए हैं वो थोड़े से आई बिलीव वुड हैव बीन मच क्या बोलते हैं हाँ वुड हैव बीन रेगुलेटेड वेल. बट खैर कोई नहीं, व्हाटएवर हैपेंस फॉर द बेस्ट. तो यहाँ पे अभी जैसे जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो IPL में आके खेल के जाते हैं या दूसरे देशों में आके खेलते हैं, हालांकि यहाँ पे एक प्रो भी एक कॉन भी है कि इंडियन प्लेयर्स के लिए कॉन यही है कि दे गेट वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स विच इज़ आई मीन स्पोर्ट्स एज इन T20 exposures excluding for their international tours, which I believe are understandable. But दूसरी साइड से कुछ प्लेयर्स जिनको वर्ल्ड कप के टाइम पे या फिर ऐसे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स पे ही ट्राई आउट करना, आई फील इट्स लिटिल स्टुपिडिटी, बट क्या ही बोल सकते हैं. हालांकि प्लेयर्स जाते हैं एक क्या बोलते हैं एक काउंटी स्टेंट के लिए, बट देन दैट्स अ रेड बॉल एंड आई डोंट थिंक टेस्ट मैच विल बी द सेम थिंग एज व्हाट वी सी इन द वाइट बॉल. तो अब BCCI ऐसे क्यों करते हैं? वेल, मेरे को भी नहीं पता सब. लाइक दिस फैक्ट आई विल गेट बैक, मतलब क्या बोलते हैं थोड़ा रिसर्च करूँगा. बट देन फिलहाल the main thing is ICC events, specifically ODI. People are saying ODI might die, this, that. But I see the best part of this is ODI is not going to die so soon. क्योंकि आप एक ऐसे फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे हो जो कि 300 बॉल का है पर टीम, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिकॉर्ड्स वहीं पर ही ज़्यादा बनते हैं. अभी भी अगर देखा जाए तो ODI में ही डबल सेंचुरी है. टेस्ट में चलो ठीक है, हाईएस्ट स्कोर हैज़ बीन ब्रीच मेनी एट टाइम्स, बट 401 हैज़ नॉट बीन ब्रीच्ड येट. वो भी एक ना एक दिन वापस ब्रीच होना ही है. बट आई डोंट सी ODI क्रिकेट डाइंग सो सून. इट विल स्टिल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. मैं बता रहा हूँ अगले दशक में ODI इज गोना बी द बिग थिंग. हाँ, वो अलग बात है कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं नहीं लेते हैं, इट्स अप टू देम. बट आई बिलीव ODI इज वन स्पोर्ट, मतलब एक फॉर्मेट विच नॉट सो सून. अब बात करते हैं एक्सपोजर की, जो मुझे लगता है विच इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द प्लेयर्स. जैसे कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक्सक्लूडिंग पाकिस्तानी, जैसे कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स दे आर नॉट एक्सपोज टू इंडियन सॉइल. दो दे थिंक दैट कि हाँ चलो सिमिलर सॉइल होगा, वैसे भी एक टाइम तो हम भी इनके पार्ट थे एंड ऑल. दिस इज नॉट अगेन दिस इज अ पॉइंट विच आई एम सेइंग प्री इंडिपेंडेंस एरा.
nothing to contradict or nothing to make a wrong point, but हाँ तो soil condition सोच के, but then it's not the same thing. And the most important thing of all, that is, अगर exposure ही नहीं मिलता है, I don't see. Yeah, political aspects is there because of which Pakistan don't play in India in so regular time. So does India don't play in Pakistan. But I don't see that Indian players not playing in other foreign league. I mean, बाकी सारे देशों में तो जाके आप खेल सकते हो, right? खैर, जो मेरे को लगता है कि Indian players should be given their allowance to expose themselves, क्योंकि अगर अभी क्रिकेट में बढ़ना है, पिछले कुछ सालों से पोस्ट 2013 इंडिया हैव मैनेज टू go to the semis and finals but could not capitalize. 2021 was just a nightmare. It was just right after COVID and आप एक ऐसे टूर्नामेंट पे जाके, मतलब क्या बोलते हैं, एक आईसीसी टूर्नामेंट होता है where you think that okay fine we will be doing it, but then you are out of league stage. And मेरे को लास्ट मतलब this was the very first time I've ever seen not the first time, second time 2012 में भी एक बार हुआ था. 2012 के बाद सीधा 2021 में इंडिया गॉट आउट ऑफ द लीग स्टेज. एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज की प्लेयर्स इन नॉट इन फॉर्म और ऐसा कुछ, इट्स जस्ट दैट द अप्रोच ऑफ द प्लेयर्स which I feel sometimes gets hampered. खैर इट्स ओके, होता है यार, सारे क्रिकेटर्स हैं, कभी कभी तो डाउनफॉल भी होते हैं, कभी ना कभी तो वापस उठते भी हैं. मेन मुद्दा ये है, अगर एक्सपोजर ढंग से नहीं मिलता है तो कैसे होगा. आई नो तो आप बोलेंगे कि 2021 में आईपीएल तो दुबई में ही हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, बट देन इज दैट इनफ? I mean, I don't find it's that enough. So I feel exposure should be given. अब इस पॉडकास्ट के दूसरे मुद्दे पे आते हैं. Are people more prioritizing on franchise cricket? Absolutely, no doubt. In fact, लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कुछ रीजंस की वजह से. That is क्योंकि पैसे मिल रहे हैं यार, no doubt on that. पैसे मिल रहे हैं. And most importantly, लोग खेलते भी हैं ये स्पोर्ट not only to represent but also to earn. अब इसकी वजह से इंटरनेशनल टीम्स को हैम्पर हो रहा है. Yes, indeed it is hampering. But at the same point of time, are they gaining something? Well, that is also happening. कुछ प्लेयर्स स्किप करते हैं just to say कि हाँ हम देश के लिए अपने आप को फिट रख रहे हैं, ये वो etc. वगैरह वगैरह. But the thing is, why do they do, specifically bowlers? Because bowlers, me being like, मैं अभी भी personally एक bowling all-rounder हूँ. Bowling all-rounder भी नहीं बोल सकते, you can say just an all-rounder, क्योंकि मैं खेलता हूँ top of the order and I should not be speaking that way. But as an all-rounder or a bowler, what I can say that pieces, जैसे कि मैं पेसर हूँ, फिर से अपनी बात कर रहा हूँ, बट कोई नहीं, सॉरी फॉर दैट. बट बीइंग अ पेसर वी डू गेट इंजरीज वेरी फ्रीक्वेंटली. और अगर जैसे कि क्या बोलते हैं, अभी द रीज़न वाई bowlers like Jasprit Bumrah or Trent Bolt are not so regular in the team because of their injuries. इनफैक्ट अगर मैं खुद का वापस फिर से अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर मैं खुद का ही एग्जाम्पल लूँ, राइट नाउ आई कैन नॉट बोल प्रॉपरली बिकॉज ऑफ माई थंब. यस, आई एम अ राइट हैंडेड स्पीडस्टर, तो आई विल बी हैविंग दैट प्रॉब्लम टू ग्रिप इट. तो वी डू नीड, और फिर हैमस्ट्रिंग्स तो होते ही रहते हैं. वो अगर होते हैं, क्यों होते हैं? बिकॉज पीपल like overstrain their body, that's the reason why. अब लोग क्रिकेट खेलते हैं, लीग खेलते हैं, नहीं खेलते, it's up to them. It's the way they are managing it. लोग बहुत सारे लीग खेल के मैनेज कर लेते हैं,
और लोग बहुत सारे लीग ना खेल के भी मैनेज कर लेते हैं, बट देन एट द एंड ऑफ द डे इट मैटर्स द वे यू प्ले, द इंटेंट. एक्सक्यूज दे देना, ये नहीं करना जस्ट टू शो कि हाँ हम पेट्रियोटिक है, देश के लिए सिर्फ है, नॉट शोइंग opponents how to play us and all. क्यों? I find it ridiculous, absolute ridiculous. Well, it's still their choice, so we should respect it. I know बहुत contradicting statements मैं दे रहा हूँ, and कुछ statements हैं कि चलो ठीक है, सही भी है गलत भी है, I cannot judge on this. ये आप लोगों के पे मैं छोड़ दूंगा. But league cricket and international cricket are two different things. Though the strata of both the things are almost equal now, but representing your country is any day above anything. खैर उसका player to player it matters, but conditions से अगर आप ज़्यादा familiarize हो जाते हैं, the main thing what happens is you get to play a lot. मतलब आपको पता है अच्छा ये पिच यहाँ का टर्निंग होगा, वहाँ का टर्निंग है. हाँ पहले के ज़माने में बोल सकते थे तो बिना ये सब करके भी पीपल हैव बीन सक्सेसफुल. बट व्हाई हैव बीन दे सक्सेसफुल? बिकॉज दे हैव बीन प्लेइंग रेगुलर डोमेस्टिक क्रिकेट एज वेल कंपेयर टू दिस जनरेशन. इंडियन क्रिकेट में मैं बता रहा हूँ, जितना मेरे को लास्ट याद है एग्जैक्टली, Virat Kohli didn't play a single domestic match. I'm not counting IPL as a domestic. It's a league match. League is different, domestic is different, and international is different. Totally different. It's been more than 10 years. I didn't hear Virat Kohli playing for Delhi, the state team which he technically represents. Yeah, Rohit Sharma has played. एंड देन अब किसी का भी नाम ले लो, जसप्रीत बुमराह played, I think 2016 was the last time when he played domestic. उसके बाद he's been playing international most of the time, and then he's on rest. Batters do need to, मतलब I feel कि डोमेस्टिक में भी जाके थोड़े रन्स बनाने चाहिए. यू नीड टू फेमिलियराइज विद योर ओन कंडीशन एज वेल. हाँ आप बोलोगे कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट देन did people know, like even though people knew that MS Dhoni plays domestic, MS Dhoni even before 2019 he made sure he played a goddamn domestic match. He played few matches but still he had an impact. So मेरा यही मोटिव है कि those who are representing the country should not consider कि हाँ भाई खेलना नहीं चाहिए domestic, ये वो गेम हो सकता है वो हो सकता है. नहीं यार, स्टॉप इट यार. इट्स जस्ट अ क्रिटिसिज्म फ्रॉम माय एंड व्हाट आई नीड, लाइक बीइंग अ यंग स्पोर्ट्स, मतलब मैं तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के टुवर्ड्स ही जा रहा हूँ. हालांकि इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आई टेक अप प्रॉपर्ली इन फ्यूचर, बट नॉनदलेस पीपल दोज हु आर रिप्रेजेंटिंग डोमेस्टिक क्रिकेट, भाई यू नीड टू प्रायोरिटाइज. क्यों बाकी देश के खिलाड़ी अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को खेलते हैं? नॉट टू जस्ट टू गेट सम कि हाँ भाई हाँ थोड़ा गेम के साथ कनेक्टेड रहेंगे या फिर ये करेंगे वो करेंगे. नहीं, जस्ट टू फेमिलियराइज देमसेल्व्स विद हाउ मच. ठीक है, यू आर ऑन टॉर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट देन इफ यू हैव बीन गिवन अ रेस्ट, टॉक टू योर गॉडडैम बोर्ड एंड get yourself into a domestic team for a while, maybe playing for a month or so, or maybe for just 3 or 4 matches. आपको क्या पता कि डोमेस्टिक में कैसे कैसे हो. you're seeing very frequent 200s. I mean आजकल कोई भी आके 200 मार के जा रहे हैं. ओडीआई में भी, वनडे इंटरनेशनल्स में स्पेसिफिकली रिसेंटली इस साल और पिछले साल को मिला के ईशान किशन एंड शुभमन गिल, मैं गलती से सूर्य को मैं बोलने वाला था, they both have reached double century, and Ishan Kishan and Shubman Gill both are active international cricketers. But then if they get an opportunity to go back and play for the domestic side, they will not even hesitate. Though they are young, still BCCI, I mean BCCI takes a lot of calls, but players too should take it up for them.
खैर ये तो हो गया फेमिनलाइजेशन एंड इन सब की बातें. अब इस साल के वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं. अभी जिस 5 ही मैच में, आई मीन 6th इज स्टिल गोइंग ऑन, नेदरलैंड एंड न्यूजीलैंड, वेयर इट्स ऑब्वियसली भाई लाइक लगता है कि वन साइडेड है, ये है वो है. बट देन द एसोसिएट नेशंस which are turning up and I mean they are performing really well. एशियन गेम्स में आप पकड़ लीजिए, मैं लीग स्टेजेस उतना खास फॉलो नहीं कर रहा था, बट देन लाइक हाँ किया था, मैं विल नॉट डिसएग्री, फॉलो ही नहीं किया था. आई डिडंट फॉलो दैट प्रॉपर्ली बट आई डिड फॉलो. वहां पे 300 रन 20 ओवर में बन रहे हैं बाय एसोसिएट टीम कॉल्ड नेपाल. I'm not saying that they play pathetic or and all stuff. They play well, no doubt on that. I mean, they have sent their main squad, whereas the teams like Afghanistan, India, Pakistan, Bangladesh have sent their B, C, D team. Like I know, like जितना मेरे को पता है, India had sent their C team. Pakistan had sent their C team. Bangladesh also had sent their C team. B team was only Afghanistan, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं उस स्क्वाड में जो वर्ल्ड कप खेले हुए खिलाड़ी हैं. बट विद दैट ऑल्सो नेपाल, आई मीन fastest century, fastest half century, the most number of runs scored in an international match. Isn't that crazy? I mean, ऐसे रोज देखने को नहीं मिलते. इसलिए हाँ, ग्राउंड छोटा है तो क्या हुआ, स्ट्राइकिंग एबिलिटी है तो क्या हुआ, इट स्टिल अप्लाइज हियर. कौन से बॉल को मारना है, कौन से बॉल को नहीं, क्योंकि अगर मार 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 खेलेंगे तो आई डोंट थिंक इट्स नथिंग मोर देन अ बेसबॉल गेम. बिकॉज बेसबॉल यू नीड टू स्ट्राइक एवरी बॉल. इट्स नॉट कि भाई अगर एक बॉल नीचे चला गया तो चलो मैं भाग सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं. वी नीड टू थिंक अ लॉट व्हाइल प्लेइंग दिस स्पोर्ट. So Asian Games में भी I have seen the top players. नेपाल बोल लीजिए, मलेशिया, ठीक है, मलेशिया वर्सेस बांग्लादेश, a match where Bangladesh deserved to lose. Just mark my words, Bangladesh deserved to lose. But still, the way they came back into the match, it was just phenomenal. I mean, मैंने बहुत ही कम मैचेस देखे होंगे. You needed 6 of 11 balls. Malaysia needed 6 of 11 balls. And the most interesting part of this is Bangladesh defended 6 runs in 11 balls by just conceding 2 goddamn runs. I mean, 2 goddamn runs in the final over. And what can else you say? I mean, that was a quarter final where if Bangladesh would have lost, by default, it would have been India versus Malaysia. So, associate teams are not doing well. ये नहीं बोल सकते. They are performing really, really well. I mean, it had been a very fighting spirit whole tournament. It was very good. Though some teams like Pakistan, whether it's their B team or main team or A team or C team, whichever team it is, they are playing pathetic now. I mean, they just recently won one World Cup match. Still, I feel their team is not performing well. Whereas associate teams are more playing well than them. I don't think ऐसे कुछ performances पे basis पे I should be judging any team, but yeah, a lot of improvements are required. वेल, वर्ल्ड कप की जब अगर बातें कर रहे हैं, जैसे कि कल की मैच की बात है, दैट इज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया केम टू इंडिया टू प्ले फॉर 3 ODI मैच वेयर दे लॉस्ट द सीरीज बाय 2-0, आई मीन 2-1. लास्ट मैच जीत गए थे. एक चीज मैंने नोटिस किया है, ऑस्ट्रेलियन इंटेंट हैज बीन द सेम थिंग, वेदर इट्स बायलैटरल और मे बी इट्स इन द वर्ल्ड कप. इट्स बीन रियली गुड. Fighting spirit. I mean, you are getting a side down, which is a number 1 team. To be noted, India is number 1 in ODI Test and T20.
and Australia is second, ranking in ODI. Australia bringing India 3 wickets down for just 2 goddamn runs. I mean, isn't that little like surprising? Why? Because they are the players. मैं हमेशा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को एक क्या बोलते हैं एक लेवल पे रखता हूँ. If India is this, Australia is this, England is this, South Africa I will still put a little bit down, Pakistan a bit, whatever the test playing nations are there. West Indies have just अभी मैं वेस्ट इंडीज के भी आऊँगा. ठीक है. I was quite shocked after listening and seeing the result of West Indies. So, here's the thing. How are these players getting it so well? A lot of skill set and mentality. They're reading the pitches here. Like, Australian players reading Indian pitches so easily. Batting mein, I understand it was quite a thing. They're playing in Chennai for a बहुत दिनों बाद खेल रहे भाई बहुत सारे प्लेयर्स. सो एक है बट स्टिल इंडिया managed to restrict Australia for 199 runs where everyone thought it will be a cakewalk, but then no, Australia did fight back. It's amazing. Like मैं ऐसे मैचेस बहुत ही कम देखने को मुझे मिलते हैं, but nonetheless it was a nice match. फिर दूसरी साइड पे देख लीजिए साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ था श्रीलंका के साथ. दैट वाज अ गॉड डैम टाइट मैच. एक पॉइंट ऑफ टाइम लग रहा था कि श्रीलंका माइट चेज इट डाउन, बट देन साउथ अफ्रीका बीइंग दैट साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स दे रेस्ट्रिक्टेड देम. 4 players scoring century. Am I right? I'll just recall it. Aiden Markram, Rassie van der Dussen, Quinton de Kock. 3 players scoring century. 300 run तो ऐसे ही आ गए. And then Henrik Larsson scoring some blitzering runs, and obviously David Miller is there. 428. And in reply of that, 369 is not a small run chase. I mean, scoring 300 plus runs is still difficult, yeah. I mean, ठीक है बन जाते वो अलग है, but कैसे बनते? A lot of mental patience which people need to do. यहाँ पे कुछ टीम्स अभी आज की मैच पे एक पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को लग ही नहीं रहा था कि न्यूजीलैंड वुड क्रॉस 300, बट देन लास्ट मोमेंट like last few overs they smacked and scored 323. and at this moment I think मैं एक बार अपना फ़ोन देख लेना चाहूँगा. मेरा फ़ोन एंड स्कोर कार्ड एक बार देख लेते, because I'm recording at this moment and I'm not watching the match. So yeah, थोड़ा था भाई. Netherlands is 142 for 4 in 29.4 overs. I mean, isn't that quite? ठीक है, Netherlands is still coming up. But now I'll speak about West Indies. 2-time World Cup champions. 2-time World Cup. And they're not playing the World Cup now. Why? Because of their low ranking. West Indies cricket have just dig their own grave. I mean, कैसे? क्यों? You are firstly playing irrelevant way of cricket. तुम्हारे खुद के players, you have legends like Sunil Narine. He's not playing international matches for West Indies. Or Andre Russell. Shimron Hetmyer को तुम खिला नहीं रहे हो. And then you are saying this, that. क्यों? Because of the payroll. And because of which payment की वजह से बहुत सारे खिलाड़ी are choosing league games. This is the reason why people are choosing. And I'm criticizing on this thing. If boards pay well, like BCCI does, I don't think people should go and play in other franchise cricket. But then, it also has its own cons. You won't get to learn how to play on some pitches. I mean, it's understandable.
होता है, but then you see West Indies cricket has just gone down. I know कभी कभी बीच बीच में होता है, but you need to again stand up and play your heart out. I don't see that same intent what I saw many years back. इंडिया के अगेंस्ट कोई एक सीरीज जीत गए होंगे शायद, that too India is not even playing with the main players. Yeah, fine. Even the Australian series which they have won, they didn't win with their main squad. They did win with a almost probable World Cup squad. So yeah, you need to understand the way you need to treat your players. खैर अब मैं ज़्यादा क्या ही बोल सकता हूँ इस बारे में. अब वर्ल्ड कप पे एक ऐसा टीम where Indians specifically love West Indies players a lot. Like me being a cricket fan, sorry. I just love West Indies when they were at the pinnacle. But now I don't see, like, they are playing really pathetic. मेरे एक पिछले पॉडकास्ट में अगर आपने सुना होगा मयंक के साथ, I did discuss something like this, but still there is no improvement. अब क्या ही बोल सकते हैं. Well, ये वाला पॉडकास्ट आई नो मतलब उतना कुछ ज़्यादा लंबा है नहीं, बट या इट्स ओके. कभी कभार पॉडकास्ट आई नीड टू मेक इट इन अ प्रॉपर वे सो दैट आई हैव टू, क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन थोड़ा सोचना पड़ता है. कोई नहीं, मैं एक और पॉडकास्ट के साथ आऊँगा. नेक्स्ट टॉपिक का एक हिंट दे देता हूँ. इट विल बी रिलेटेड टू क्रिकेट अगेन, ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्रिक-राज का वीडियो है, क्रिक-कास्ट का वीडियो है, सॉरी. तो जिस टॉपिक का मैं स्क्रैप आउट किया था वही उसी वीडियो को अगर आप चाहें, इफ़ यू वांट दैट वीडियो टू बी अप और दिस ऑडियो क्लिप, ऑडियो पॉडकास्ट which you are listening on Spotify, Amazon Music, and wherever you are able to listen to this, because this will be on YouTube as well as on Spotify podcasts as well. अगर आप चाहते हैं, make sure you like this, share this with your friends and family. Please do subscribe obviously, and YouTube चैनल के लिए मैं बोल देता हूँ, please do give your suggestions, like, share, subscribe, hit the bell icon. For podcast, I will just say only one thing. Please guys, share it with as many people you can, क्योंकि मैं शायद कुछ बकवास बोल सकता हूँ, कुछ सही चीज़ें बोल सकता हूँ जैसे मैंने पहले बोला है, but then a lot of intent is there. So till then, thanks for listening viewers, and thanks for watching to viewers actually, and listeners, thanks for listening. Bye bye.